बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ालल्लाहु तबारक व तआला क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि ए मेरे बंदे जिन्होंने अपने जानों पर ज़्यादती की, मेरी रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं गुनाह को पूरे के पूरे, और बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले हैं और निहायत रहम करने वाले हैं। Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, O my servants, those that have done extravagance, those that have done wrong on themselves, do not lose hope of my mercy. Allah subhanahu wa ta'ala will forgive your sins completely, and Allah ta'ala is the of forgiving, the most merciful. Regarding this ayat, I mentioned yesterday that there were certain people that came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They had committed many wrong, and they wanted to embrace Islam, but therefore will Allah forgive. Allah subhanahu wa ta'ala, in answering the question, revealed this ayat saying that Allah will forgive. इस आयत का खुलासा, उसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये फरमा रही है, मैं यकीनन तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करूँगा और मुझे माफ़ी बहुत पसंद है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये फरमा रही है, अगरचे तुम्हारे गुनाह बहुत ज़्यादा है फिर भी तब भी मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करूँगा। The khulasa of this ayat, the meaning of this ayat is Allah subhanahu wa ta'ala is trying to say, is encouraging, is telling us this, that I will definitely forgive, and I want to forgive. Despite how many guna you have done, despite all the wrongdoing you done, I will still forgive you. और आज मज़मून यही है कि अल्लाह की रहमत, और आज ये समझना है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, इतना वसी है कि हमारे जहन उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। So the topic of to moving on from Allah's mercy, what we need to understand, Allah's mercy is so vast that our mind can't even comprehend. This is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. We need to instill this understanding that Allah's mercy is so vast that our mind can't even comprehend. As we will learn, there are many incidents, many stories which will explain the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and how vast the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is. रहम का माना यही है कि बावजूद किसी को सज़ा देना है, किसी को जो सज़ा की मुस्तहिक है, फिर भी उसके साथ माफ़ी और मेहरबानी का मामला करना। कोई इतना गुनाह किया है वो सज़ा की मुस्तहिक है, फिर भी उसके साथ माफ़ी का मामला करना, उसके साथ मेहरबानी का मामला करना, ये रहम का माना है। The meaning of mercy is being kind, compassionate, and more simple. A person deserves to be punished, the person deserves to be accountable, but despite that, Allah subhanahu wa ta'ala forgives that person, is kind to that person, and is compassionate to a person. As I mentioned, Allah subhanahu wa ta'ala mercy is very vast, and in the Quran and Hadith there's many ayats and hadiths on the importance of Allah's mercy to encourage us and to not lose up Allah's mercy. We see in the Quran, हम देखते बार बार हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं गफूरुर रहीम गफूरुर रहीम गफूरुर रहीम। आज भी हमने नमाज में पढ़ा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं वकान अल्लाहु गफूरुर रहीमा। बार अल्लाह ताला हमको याद दिलाते हैं कि अल्लाह माफ़ करने वाले हैं, मेरे तरफ आ जा, मैं आपको माफ़ करूँगा, मैं बहुत रहम करने वाला हूँ। In the Quran we will see, as we pray in the Quran so many times, Allah Ta'ala will say Ghafur Rahim, Inna Allah Ghafur Rahim, wa kana Allah Ghafur Rahima. Many times we will see that Allah Subhanahu wa Ta'ala is telling us, turn back, oh my servant, turn back, I will forgive, I will forgive, I will forgive. So many times we will see this. Countless times Allah Ta'ala says this. Secondly, Allah Subhanahu wa Ta'ala says in the Quran, wa rahmati wasi'at kulla shay, wa rahmati wasi'at kulla shay. अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में फरमाते हैं कि मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुई है, मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुई है, यानी मेरी रहमत हर चीज़ के ऊपर है और रहमत का दरवाज़ा हमेशा खोला है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन कुरान से
that wasiyat rahmati kulla shay, that my mercy comes over everything. My mercy embraces everything. My mercy encompasses everything. As in, my mercy reaches every creation. My mercy reaches every creation. And the doors of mercy are always open. So in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala is telling us about His mercy, that is comfort. This is why when we do dua to Allah subhanahu wa ta'ala, when we ask for forgiveness, this is the way we should talk to Allah ta'ala. When we ask for forgiveness, the way we should ask for Allah subhanahu wa ta'ala, we should say to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, we are very sinful. So first we should admit, show our humility in front of Allah. Allah ta'ala, we are very sinful. So we're doing ikrar. Then we say to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, every single part of our body is sinful, every hair is sinful. And then we say to Allah subhanahu wa ta'ala, we admit our guna has reached the sky, the bottom of the earth, we are full of sins. But then we say to Allah subhanahu wa ta'ala, your mercy is much more than our guna. So don't look at our sins, look at your mercy and forgive us. If we talk to Allah subhanahu wa ta'ala like this, ज़रूर बज़रूर Allah ta'ala will forgive. जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगे तो इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सबसे पहले इकरार करें कि अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, बदन के हर एक बाल गुनहगार है, गुनाह में डूबा हुआ हूँ, इस तरह अल्लाह से मांग। फिर अल्लाह ताला से ये भी अर्ज़ करे कि अल्लाह ताला हम इकरार करते हैं कि हमने बहुत गुनाह किया, लेकिन अल्लाह ये बात भी पक्की है कि आपकी रहमत तो हमारे गुनाह से कई ज़्यादा है, और हमारे गुनाहों को मत देख, अपने रहमत कामिला को देख कर हमारे गुनाह को माफ़ फरमा। So when we talk to Allah, when we do dua to Allah subhanahu wa ta'ala, we should know how to talk to Allah subhanahu wa ta'ala. Dua is a way of conversing with Allah subhanahu wa ta'ala. So we tell Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, look, we are very sinful, but your rahmat your rahmat is so vast, is much more than our sins, and hence look at your mercy and forgive. Don't look at our sins, look at your mercy and forgive. So from here we learn from the Quran ayat that Allah Ta'ala's mercy it covers everything. Same way Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, Inna rahmatallah qareebun min al-muhsinin. बेशक अल्लाह की रहमत नेकोकारों के लिए करीब है. बेशक अल्लाह ताला की रहमत नेकोकारों के लिए करीब है. Allah's mercy is very close for those that do good. So here we can understand another point, that if Allah's mercy is showering down, is so on the sinners, so imagine those that do good, those that are pious, how merciful Allah will be to these people. And in the month of Ramadan, the pious people say, the ulama mention that in the month of Ramadan, Allah's mercy, they say, is two types. And they give an example that, normally when it's raining, and when it's just little dripping, this is, little rain. So this is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala throughout the year. And then in the month of Ramadan, when it sometimes just pours down, showering down, this is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala in the month of Ramadan. So जो अल्लाह की रहमत है, जो आम रहमत है पूरे साल, वो एक थोड़ा पानी की मानिन है, लेकिन रमज़ान में एक मूसलाधार बारिश की तरह है रहमत, मूसलाधार बारिश की तरह है. Now so one might say, okay, if Allah's rahmat is pouring down, Allah's rahmat is pouring down, how come we don't feel it? So sometimes the answer to this is, sometimes we pour umbrella over us. The umbrella is guna. If Allah's mercy is coming down upon us, and if we are missing our namaz, if we are doing sins, we backbiting, or some kind of guna we're doing, then we will not feel the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. So we have to ensure, if you want to feel the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, if you want to get drenched in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, is a must that we stay away from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. So the Quran ayat also tells us the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, जिसका करीब माना है कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक की तकमील की, यानी तख्लीक की, मुकम्मल तौर पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मखलूक की तख्लीक की, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने अर्श के ऊपर यह लिखा हुआ कि इन्ना रहमती गलबत ग़ज़बी, इन्ना रहमती गलबत ग़ज़बी. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया कि जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मखलूक की तख्लीक की, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर सबक़त की गई है, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर सबक़त की गई है. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has mentioned that when Allah subhanahu wa ta'ala completed the creation,
he wrote in his book, and on the arsh he wrote this, that my mercy will prevail my wrath. My mercy will prevail my wrath. So Allah subhanahu wa ta'ala, one is Allah's mercy and one is Allah's anger. Allah's mercy will always come first. Allah's mercy will always come first. Allah's mercy will be dominant. Allah's mercy will always be dominant. So from these ayats, today's lesson we can learn, and what we need to understand, that Allah subhanahu wa ta'ala's mercy is very vast. So we need to acquire the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Among the dua, we should always ask for Allah's mercy. We should beg in front of Allah's mercy. And we see many du'as, Allahumma ighfirli warhamni. So when we do sizdah, when you go into sizdah and we sit like this, in the jalsa position, one of the du'a that we should do, Allahumma ighfirli warhamni. Allahumma ighfirli warhamni warzuqni wa'adini wa'afini. Allah, forgive me, have mercy. So among the dua we should always ask for Allah's mercy. We see in the Quran, in the 18th para, right there Allah Ta'ala says, Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Such a beautiful dua. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi ighfir, Allah forgive. Warham, have mercy. Wa anta khairur rahimin, and you are the best merciful person. This is the dua that Allah teaching them. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Allah, you are the that can look after us. Faghfir lana, forgive us. Warhamna, have mercy upon us. And you are the most forgiving. You are the best being that can forgive. So today we learn that Allah's mercy is very vast. It's so vast our mind can't comprehend. And we will inshallah learn about incidents how Allah Ta'ala forgives. Allah looks for little excuse to forgive. This is our Allah subhanahu wa ta'ala. This is how kind Allah subhanahu wa ta'ala is. This is how compassionate. Even so, we can also learn sometimes when we meet our friends. Sometimes we might meet people that are very far from Deen, that got lost hope. Encourage them. Talk about the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Talk about the amazing quality of Allah subhanahu wa ta'ala, which is the most merciful. Allah ta'ala हम सबको Allah ta'ala इस बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. Allah grant us all the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah shower His mercy upon us. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.